So good afternoon to all of you. How are you doing? Okay. So are you excited about money? Why so? Why money is important? Can you buy happiness with money? Can you buy sleep with money? Yes? How many people said yes? Sleep with money? You can. Okay. Okay. So can you buy relationships with money? Someone said yes again. Okay. So today I am going to share something unique, something different, which changed my mind towards the concept of money. Right? So we believe money is power. I also believe that. Money is power, but money is not everything. Right? So how to look at money and how to acquire money, how to keep it and grow it, that is my story. That is what I want to share with all of you. Okay, I want 2-3 volunteers. Can you come on the stage? Please, one girl, please come. Take a mic and come. Yes. Okay, what's your good name? Jain sir, my name is Samarth Nathe. Samarth. What's your name? Jain sir, my name is Manya Mishrikar. Manya. So, clapping for Manya and Samarth, they have come on the stage. My simple question to you. Do you want to become financially free? Sir, I don't really understand what does being financially No, free I'm means. asking, do you want to become financially free? Do you mean to not think to spend money? Just financial freedom. Do you want to achieve financial freedom? Yes, sir. Yes sir. Do you want to achieve financial freedom? Yes. So, how many of you want to achieve financial freedom? Okay. So, what is the definition of financial freedom? So, you want to achieve something. So for me, it is when I had to make a choice to spend on something, I should not get thoughts on my mind. So that's it's a financial freedom for me. Similarly, before spending, I should not have to think too much about it. Okay. Then, okay, if I ask you, how much money should you have to become financially free? Can you give me a number? 100 crores maybe, sir. 100 crores. Okay. For you? Continuous flow of money, not any. Continuous flow of money means what? How much? 50,000 would be enough for you? Then you should give a number. 20 crores. 20 crores. Why not 2 crore or why not 200 crores? Why 20 crore? And for you, why not 1 crore or why not 1000 crore? So for me, why not 1 crore? It's because if I liked a luxury car like Rolls Royce, if I have 1 crore in my pocket, I'll think about purchasing that item. But if I have 100 crores in my pocket, I'll not think about purchasing Rolls Royce. Okay. Not quite sure why I chose 20, but I think that according to my lifestyles and how much money I Today's spend- lifestyle. Yes. Future, Yes. it can change, Yes. right? Yes. Okay. Thank you very much. So Thank you, here sir. is one very important lesson for all of you. She said 20 crores, he said 100 crores. Someone can say 500 crores, someone can say 5,000 crores, right? So it's different for everyone. Why it's different? Because you need to understand yourself first. You need to understand what kind of life you want to live, what kind of life you want to have.
That is important. ठीक है? So, what I need to do, I need to understand the concept of financial freedom, which I give through only 3 words. Those 3 words are very simple. First is rising expenses. Rising expenses means my expenses will keep on increasing till I am living every year, right? My expenses will keep on increasing every year. So rising expenses is the first thing of financial freedom. Second, if my expenses are increasing, my income should increase at a faster pace than my expenses. So second concept is rising income. But I am saying you are financially free. It means you don't want to work, right? Your money will work for you. Your money will work for you. So the third thing is rising investments. So when you create a circle of rising expenses, rising income, and rising investment, that becomes financial freedom for anyone. Got it? Rising expenses, rising income, and rising investments. So the concept of financial freedom that starts from the expenses. So you need to identify the expense part first. So if I say the expense of any family today is 2 lakh per month, how much it would be yearly? Roughly 25 lakhs. So if he is earning 25 lakh through investments, is he financially free? No. Reason being, the expenses will increase every year, right? So if my expenses will increase, I need to have income which is higher than my expenses. And I need to have investment which can generate regular income in an increasing mode which is higher than my expenses. So for earning 25 lakh per year, how much investment should I have? Roughly say I can earn 10% per year on my investment. So how much investment should I have? 2.5 crores. But again the question comes, if I have 2.5 crores, then I am not financially free because it will give me 25 lakh every month, but my expenses are increasing. So instead of having 2.5 crore, if I have 3 crores, then how much income I will have? How much income? Anuj? Manun ka 30 lakhs. So I spend 25 lakhs, I save and add it to my, so next year how much I am going to get? My investment has increased this year, right? So I need to calculate how much my expenses will increase. My expenses, if they are increasing by say 10%, I need to check my investment should also increase at least by 10%, right? So if 2.5 crore is my investment, then my investment should increase by 25 lakh every year, right? So to increase 25 lakh, I should have additional 2.5 crore. Additional 2. So I have 5 crore with me right now. I am generating income of how much? On 5 crore? 50 lakhs. I spend 25 lakh. Remaining 25 lakh will go to back to investments. Now I have investment of 5.25. How much income I will get? 52 lakh 50,000. So this year I am going to spend 27.5 lakhs. Remaining 25 will go to investments. Now how much is my investment now?
5.5 crores. How much income I will get? 55 lakh. So this year I will spend 30 lakh and 25 lakh will go back to. So I've created a cycle which is giving me increasing expenses, increasing income and increasing. So this circle is known as circle of financial freedom. So हिंदी में पूछता हूं आपसे, क्या आप लोग ये सर्कल बना सकते हो? Now you got कि financial freedom क्या है and how you can achieve it. So every one of you make a target for yourself. So say after 10 years, what kind of lifestyle you want to have? For that lifestyle, how much will be my expenses per year? And how I can create a portfolio which is giving me increasing income every year, which can meet up my expenses and my portfolio can also keep increasing. Got it? Hanji, any questions on this? Have you understood concept? अब तो कोई नहीं बोलेगा ना अनलिमिटेड पैसा चाहिए या 100 करोड़ चाहिए 50 करोड़ चाहिए. हाउ मच यू नीड यू कैन कैलकुलेट योर सेल्फ, राइट? You can? So money is actually not a difficult subject. You make it difficult because you don't know what you want from life. Once you understand that, life is sorted, life is easy, and you can live life like a king. So I passed out from the same college in 2005. 2005, it's a long journey, right? But आप लोगों को क्या लगता है? My journey has been like जॉब मिली, जॉब किया, जॉब में ग्रो करते रहे and today I'm here. ऐसा ही कुछ रहा होगा? या आपको कुछ ऐसा चाहिए which is like a movie, थोड़ा सा जिसमें थ्रिल हो, अप्स एंड डाउन्स हो, मज़ा हो, ऐसा कुछ चाहिए? और मेरी लव स्टोरी भी हो, है ना? MBA वाले हो तो वो भी चाहिए होगी. So first time in my life I am sharing my story on any stage. So I want, let's start this story with a round of applause. So I passed out from here in 2005. I got certain opportunities which I denied. And I went to a company named Capstone Securities Private Limited, which was trading in the US markets. So I thought I should do something different, something unique, not what everyone is doing. बैंक में तो जॉब मिल ही जाएगी, right? So people were getting higher packages than me in their jobs, but I preferred a job which was not common, and that was trading into the US and European markets. अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? जब मेरे दोस्तों की जॉब खत्म होती थी, मेरी शुरू होती थी. So I didn't have friends. सारी दुनिया जब सो रही होती थी, हम काम कर रहे होते थे. Right? So my job started at 6 p.m. in the evening. It went up to 2:30 in the night. That was my job. Was that a problem? क्यों? यार मेरे फ्रेंड्स मेरे पास नहीं हैं, फैमिली मेरे पास नहीं है, और टाइमिंग्स हैं काम की. प्रॉब्लम है ना? है कि नहीं है? नहीं है. This was an opportunity for me. How this was an opportunity? I thought, यार मॉर्निंग में मेरे दोस्त तो ऑफिस चले जाते हैं और मैं मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक क्या करूं? What can I do? So I went to certain companies and I said I want to work during the day, but I have limited time.
So one company, Wealth Managers India, they said, Vivek, let's do the research project, but we cannot pay you much. So at that time, only 12,000 rupees Capstone was paying me. Only 12,000. My friends were getting 15, 16,000 rupees. And this another company where I was empaneled for that project, they said we can pay you only 7,000. I was more than happy. Why? Because my friends were earning 15, 16 and I am earning 19,000 now. Right? So, I joined 2 jobs at one time. One in the night, one during the day. And people called me fool. They said, you are not living your life. मैंने कहा, this is my life. This is what I wanted to do. Right? So here comes a twist. क्या twist आया? घर वालों का प्रेशर. किस चीज के लिए? शादी के. ओके. तो मैंने सोचा यार अब शादी तो करनी है ना? So I had a girl in my close circle. अब मजा आ रहा है सबको. So I had a girl in my close circle जो मुझे लगता था कि she is the perfect marriage or family girl जिससे शादी की जा सके. So I went to her. I said कि फैमिली का कोई प्रेशर है क्या? She said हाँ यार फैमिली पीछे पड़ी है शादी के. मैंने कहा सेम विद मी. तो शादी कर लें. तो देयर वाज ओनली वन कंडीशन कि फैमिलीज को मनाना है. सो फर्स्ट कंडीशन वाज टू कन्विंस द फैमिलीज एंड देन गेट मैरिड. अब यहां पे एक चैलेंज और आता है. द गर्ल इज फ्रॉम महाराष्ट्र एंड गाय इज फ्रॉम हरियाणा. द गर्ल इज ए सिंधी गर्ल एंड गाय इज ए राजपूत गाय. सो डिफिकल्ट. बट हम मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं. वी कैन मेक एवरीथिंग इजी. Isn't it? So I took this as a mission कि यार ये तो करना है. Right? So it took me almost 1.5 years to convince both the families. अब उसमें बहुत कुछ हुआ. बहुत कुछ ऐसा हुआ which seemed impossible. जैसे कि my family put a condition कि यार उनकी फैमिली यहाँ पे मिलने आए तब हम बात करेंगे. अब यार 1000 किलोमीटर दूर से आप किसी फैमिली को बुला सकते हो और वो भी जो खुद कन्विंस नहीं है. सो वी प्लेड ए गेम. आई आस्क्ड माय गर्लफ्रेंड एट दैट टाइम, नाउ शी इज वाइफ, सो कि यू ब्रिंग योर फैमिली टू जयपुर फॉर ए ट्रिप. सो दे केम टू जयपुर फॉर ए ट्रिप एंड देन फर्दर शी कन्विंस्ड देम टू गो टू Delhi for another trip. So they came to Delhi and we hijacked them and took them to my hometown Kurukshetra. So their meeting happened. My father initially denied. I said one simple thing: if you can find a better girl than her, I am ready. If you can't, then don't force me. Simple. So accept caste difference and the distance. Everything is perfect. But father तो father होते हैं. एक कंडीशन लगा दी. Before marriage shift to Delhi. Right? तो यहां से मेरी लाइफ का फर्स्ट चैलेंज शुरू हुआ कि यार अच्छी खासी जॉब कर रहा हूं, सेटल्ड हूं, अच्छा काम कर रहा हूं, एंड एट दैट टाइम अर्निंग 20,000 वाज डिसेंट मनी. राइट? It might be 1.5 lakh today, something. So I thought कि ये रिस्क तो लेना पड़ेगा. जॉब छोड़ा. रिसर्च कंपनी ने मुझे काउंटर ऑफर दिया कि विवेक फुल टाइम हमारे साथ आ जाओ एंड वट एवर यू आर अर्निंग विदाउट इंटरव्यू वी विल गिव यू 20% एक्स्ट्रा. राइट? I denied that offer and went back to
दिल्ली, ठीक है, मैरिज हो गई, सब कुछ हो गया, जॉब फाइंड आउट की. सो आई ज्वाइंड केसी ग्रुप ऑफ कंपनीज एज एरिया मैनेजर देयर, एंड माई वाइफ ऑल्सो ज्वाइंड द सेम कंपनी. अब तो लाइफ सॉर्टेड है ना, अच्छी है कि नहीं है? दोनों अच्छी जॉब कर रहे हैं यार. 30,000 I am earning, 20,000 she is earning, 50,000 rupees at that time was good money, right? So we were earning well, but यार लाइफ इतनी इजी थोड़े ना होती है. 2007 का 8 का स्टॉक मार्केट क्रैश किस किस को पता है? सबको पता है? So that was not a crash in the stock market, that was a crash in our life. So the whole team was fired on the single day by paying 1 month salary to everyone. Newly married, 3 months in the job, market crashed, and we both were jobless on that day. So 2008, me and my wife, we both were jobless. Trying 2-3 months, we didn't get any job. Everyone denied. अब ऐसे में क्या होता है, लोग आपको बड़ी अच्छे अच्छे सजेशंस देना शुरू करते हैं. क्या सजेशंस आते हैं? गलत इंडस्ट्री में हो, आते हैं ना, कोई भी जॉब ले लो, ऐसे ही है, राइट? और क्या होता है? और किस तरह के सजेशन आते हैं? हाँ, गांव वापस आ जाओ. गांव, गवर्नमेंट जॉब तो और भी मुश्किल है यार. गांव वापस आ जाओ. मेरी फैमिली जॉब वाली थी, तो बिजनेस तो हो ही नहीं सकता था, राइट? तो इट वाज लाइक कि आपकी वाइफ से आपका झगड़ा हो गया और लोग आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि यार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लो. ऐसे थोड़ी ना चलता है, नहीं होता ना. आई वॉज मैरिड टू इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री, तो वहाँ पे तो यार धोखा नहीं देना बनता ना, तो थोड़ा तो साथ देना था. तो वहाँ पे मैंने एक डिसीजन लिया अपनी लाइफ का कि यार अब जॉब के भरोसे रहना ही नहीं है. जब स्किल है, हम किसी और के लिए काम कर सकते हैं, वाई कांट वी वर्क फॉर ओवर सेल्स, राइट? यही चैलेंज आते हैं ना. सो एवरी वन ऑफ यू सिटिंग हियर इज ए स्किलफुल पर्सन. है आप में स्किल्स? इफ आई आस्क यू कि कल तक अर्न सम अमाउंट ऑफ मनी, कैन यू डू दैट विद योर स्किल? यस तो बोल रहे हो, पर करने को बोलूंगा, कर पाओगे क्या? सो इफ यू हैव दैट मच कॉन्फिडेंस, तो रिमेंबर वन थिंग, नो वन कैन स्टॉप यू. So the biggest confidence in yourself is the one that you can earn for yourself. So if you can do that, तो उससे better कुछ भी नहीं है लाइफ में, right? So 2008, jobless, newly married, wife is also jobless. 2-3 months, everyone denied a job. So I went to one institute that was a stock market training institute. That was one of the biggest stock market training institute of North India at that time. They said कि हम तो जॉब नहीं देंगे. तो मैंने डिसाइड किया यार ठीक है मत दो, आई विल बिकम योर कॉम्पिटिटर. तो NSC के एग्जाम्स होते हैं, NISM के, ऐसे ही उस टाइम पे NCFM होता था. तो वो NCFM के एग्जाम की प्रिपरेशन कराते थे, थोड़ा सा ट्रेडिंग टर्मिनल सिखाते थे, एंड दे यूज्ड टू चार्ज 50,000 rupees फॉर दैट. And I was aware of it, but they were having a very good office, good setup like this, right? तो मैंने कहा ठीक है यार छोटा सा सेटअप बनाते हैं. So I took a 400 square feet place, छोटी सी जगह, जिसमें मैंने I think 8 chairs लगाई, और मैंने कहा जो कोर्स वो 50,000 में करा रहे हैं, I will give the same course in 11,000 rupees.
और उसमें भी कंडीशन लगा दी कि इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम नेक्स्ट टाइम फीस भी हम भरेंगे. 1,000 rupees was the fees, so फीस भी हम भरेंगे नेक्स्ट टाइम. दैट इज व्हाट आई सेड. पीपल स्टार्टेड कमिंग. भाई 50,000 की चीज 11,000 में मिल रही है. पीपल स्टार्टेड कमिंग. तो इनिशियली मेरे पास 2-4 स्टूडेंट आए फर्स्ट मंथ में. फिर मेरे पास नंबर्स बढ़ते चले गए एंड नंबर्स बढ़ते बढ़ते बाय द एंड ऑफ 2008 इतने स्टूडेंट्स आने शुरू हो गए कि मेरे पास कॉल आ गया कि सर वो डायरेक्टर वांट्स टू मीट. मेरा रिप्लाई क्या होना चाहिए था ऐसे में? क्यों यार, एक बड़े इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बुला रहा है, ही विल ऑफर यू समथिंग गुड, आपकी लाइफ आगे सेटल हो जाएगी. व्हाई नॉट? हाँ, I went to him. Do you know why? क्यों बताओ ना. राजपूत हो यार, थोड़ी तो डिग्निटी है ना. I went to him. Sir, I came to meet you. You did not meet me because I came here for a job. Today you called me. Why you called me? Because I am your competition. So thank you very much for inviting and I will remain your competition. Thank you so much. So that kind of courage you should have, that kind of confidence you should have on yourself. So after that I got calls from lot of companies. So one company, Well India Securities, which was a broking firm, they said कि विवेक आप छोटा सा ऑफिस चला रहे हो, स्टूडेंट्स भी लिमिटेड हैं, वाई डोंट यू मेक इट बिग. मैंने कहा ठीक है, आई एम रेडी, लेट्स बिकम पार्टनर्स. सो वी बिकेम पार्टनर्स. सो दे गेव मी ए प्लेस ऑफ अराउंड 2,500 square feet विद ए टीम, मार्केटिंग टीम, काउंसलर्स, अच्छे से रिसेप्शन एरिया था वहाँ पे. तो वहाँ पे मेरे को पूरा सेटअप मिल गया. इट वाज द सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप व्हाट दैट बिगेस्ट इंस्टीट्यूट वाज रनिंग. तो मैंने कहा यार अब सेटअप मिल गया है तो नंबर 1 भी तो हमें ही बनना पड़ेगा ना. उस इंस्टीट्यूट को तो नंबर 1 नहीं रहने देना है, राइट? सो आई सेड टू दैट कंपनी कि इंस्टीट्यूट तो मैं चलाऊंगा, आई ऑल्सो वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन योर रिसर्च. सो दे मेड मी हेड ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग with that company. The beauty of that decision, what was the beauty of that decision? That was a big broking company. So they said, Vivek, why don't you represent on media? So I said, I can. So I went to a channel which was A to Z News. It was a very small channel. तो मैंने कहा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेट अस गो देयर, देखते हैं मीडिया कैसे काम करता है. And that program which happened, it was so wonderful that Zee Business called me. Zee Business said कि we want to invite you for a program. So in 2008 I was jobless. In 2009 I was sitting on Zee Business. Could you imagine that? With a person who was jobless, who was newly married, broken, market crashed, and sitting on Zee Business. So, उसके बाद कंटिन्यूसली मैंने बिजनेस चैनल्स पे जाना शुरू किया. सो जी बिजनेस, CNBC, ET Now, India TV. So I've given almost 1,000 programs on all these channels. And in 2012, I was nominated for the best analyst of India in fundamental research category by Zee Business. And Modi ji was the person who was going to present that award, although I did not get that award. But if I am nominated, I consider myself to be happy. Reason being, I am among the top 10 analysts of India. Right? In 2013 again, I was nominated for the same award.
but my bad luck, I did not pay, so I did not get the award. Right? But one thing I could understood, that I am doing something good, that I am getting nominated for one of the big awards repeatedly. So I am doing something good, right? So continuously I kept doing well in my field, and in 2011 it became the biggest stock market training institute of not North India but of India, and the name was Institute of Bulls and Bears Management. आप आज भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, ऑल्दो मेरे छोड़ने के बाद इट वॉज नॉट डूइंग दैट वेल. टिल द टाइम आई वॉज देयर, we were having almost 100 students every month, 100 new students every month in that institute. Later on, it had tie-up with BSE, Bombay Stock Exchange. It had tie-up with MCX, lot of universities, and it became the top choice for the people who want to pursue their career into financial markets. So it became the biggest stock market training institute of India by 2011-12, right? इन द मीन वाइल मैं खाली बैठने वालों में से तो था नहीं, तो एक चीज मैंने और की. क्या किया कि इतना एक्सपीरियंस जब मिल रहा है, दिस एक्सपीरियंस आई शुड शेयर विद द जनरेशंस विच आर कमिंग अप. सो आई स्टार्टेड राइटिंग. माई फर्स्ट बुक वॉज पब्लिश्ड इन 2011, and which was the first book of India on trading psychology. It was published by the biggest publisher of India. You must have heard the name of Diamond Pocket Books. This book was sold everywhere, Amazon, eBay, Rediffbook, Google Books, from Kolkata railway station to London airport, from Jammu bus stand to Kanyakumari temples, everywhere it was sold, right? अब यहाँ पे एक बड़ा ट्विस्ट आता है कि my father was not happy with me. आप पूछो क्यों? जब आप लोग MBA करने आए तो आपके फादर ने या फैमिली ने कुछ बोला होगा ना कि वहाँ जा रहे हो, MBA मार्केटिंग करना है, फाइनेंस करना है, ये करना है, राइट? और आपको इस तरह का पर्टिकुलरली जॉब करना है, ऐसा ही कुछ मैसेज मिला होगा, राइट? द सेम थिंग हैपेंड विद मी ऑल्सो, कि MBA फाइनेंस में करना है एंड गेट ए जॉब ईदर इनटू ए बैंक और ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. पर मैंने तो वैसा कुछ किया ही नहीं, तो फादर क्यों हैप्पी होंगे? नहीं होंगे ना, राइट? तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो मेरे फादर चाहते थे या जो मेरी फैमिली चाहती थी. मैंने कुछ किया समथिंग डिफरेंट, समथिंग जो शायद मेरी फैमिली में कोई भी ना करता. रीजन बीइंग एवरीवन वाज लाइक ए जॉब करना है, जॉब करना है, एंटरप्रेन्योर नहीं बनना है, क्योंकि बिजनेस में तो अप्स एंड डाउन्स होते हैं. बट व्हेन यू आर एंटरप्रेन्योर, तो आपका पैशन और आपका कॉन्फिडेंस जो होता है ना, इट्स एट स्काई हाई. तो वहाँ पे एक ऐसा टर्न अराउंड आया कि मेरे फादर को मेरे गांव वाले बोलते थे कि आपका बेटा टीवी पे आता है, नेशनल टीवी पे, जी बिजनेस पे, CNBC पे, एंड वी आर प्राउड ऑफ हिम. बट माई फादर वाजंट. टीवी पे आने के बाद भी, राइट? सो एक दिन वो क्या करते हैं, वो किसी स्टॉक ब्रोकर के पास गए, उसको बोलते हैं कि कुछ पैसे हैं मेरे को इन्वेस्ट करने हैं. तो माय कज़न वाज वर्किंग एट द सेम ब्रोकर. तो वो बोलते हैं कि सर इनका बेटा ये है. तो ब्रोकर बोलता है सर आप हमारे पास क्यों आए हो जब वो है? तो वो कहते हो तो बच्चा है. फॉर फादर आई वॉज ए बच्चा. तो ब्रोकर सेड कि जो बच्चा है वो हमारे गुरुजी हैं. तो माय फादर वाज लाइक कि यार ये क्या हो रहा है? कहते नहीं नहीं उसको नहीं पता है कुछ, आप लोग इन्वेस्ट करो.
तो जब ये सब कुछ हुआ, आई फेल्ट यार क्या हो रहा है लाइफ में, मज़ा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लगता ना, फैमिली का कोई खुश नहीं है आपसे, तो स्पेशली पेरेंट्स, वाइफ, है ना। तो मैंने कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा ऐसा कि फादर खुश रहें। तो पहली बात तो माय फादर वाज ए रिटायर्ड प्रिंसिपल, तो एजुकेशन से उनको बहुत वो था। तो मैंने जब अपनी बुक लिखी और अपनी बुक के पेज में अपने फादर का नाम डाला और उस बुक की पहली कॉपी उनको गिफ्ट की, ऑन दैट डे ही वॉज हाफ कन्विंस्ड कि यस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है। सो 2012 में मेरी सेकंड बुक आई, विच वॉज ऑन रिक्वेस्ट बाय डायमंड ऑन म्यूचुअल फंड्स। सो म्यूचुअल फंड्स लेडर टू वेल्थ क्रिएशन, दैट वॉज माई सेकेंड बुक विच आई हैव रिटन। तो जब सेकेंड बुक लिखी तब मेरे फादर को लगा यार काम तो अच्छा कर रहा है, ये बुक्स भी लिख रहा है, टीवी पे भी आ रहा है, और आज की डेट में घर वर भी खरीद लिया, पैसे भी कमा रहा होगा, तो कुछ तो अच्छा कर ही रहा है। तो ही वॉज हाफ कन्विंस्ड। तो हुआ क्या, मेरे फादर का ना एक टीचर्स का मीटिंग होता है ना, जैसे उस तरह से मीटिंग हुआ, और जब वहाँ मीटिंग हुआ तो मैं उनके साथ में गया, और जितने वहाँ टीचर्स थे उन सब ने बोला कि वी वांट विवेक टू स्पीक ऑन द स्टेज। और उस दिन मैंने जो बोला, उसके बाद से माय फादर वाज टोटली ट्रांसफॉर्म्ड। ही सेड कि हमारी फैमिली में जो किसी ने नहीं किया वो तूने किया है, एंड दैट वाज द डे माय कॉन्फिडेंस वाज डबल्ड फ्रॉम व्हाट आई वाज। सो व्हेन your family supports you in your decisions, but remember one thing, वो तब तक सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक यहाँ आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते, या फिर आप उनको फुल्ली कन्विंस नहीं कर लेते कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बट यू शुड बी श्योर ऑफ कि वट एवर यू आर डूइंग, तो आप अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये मेरी जर्नी 2012-13 तक हो गई। अच्छा चल रहा है ना सब? कुछ खराब हो सकता है क्या? हाँ? तो जिस कंपनी के साथ में मेरा पार्टनरशिप था, दे डम्प्ड मी। दे सेड विवेक यू आर नॉट ए पार्टनर, यू आर द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। मैंने कहा मुझे तो ऐसा नहीं लगता, आई एम पार्टनर। तो उन्होंने मेरी जो बुक्स थी वो कहते आप नहीं ले जा सकते ऑफिस से बाहर, एंड आप इन कंडीशंस पे काम करोगे तो करो, नहीं तो। मैंने कहा ठीक है सर, आपको लगता है कि इंस्टीट्यूट आप चला रहे हैं तो आप ही चलाइए, मैं नहीं चलाऊंगा। फ्रॉम टुमारो आई एम नॉट कमिंग, राइट? एंड व्हेन आई से समथिंग इट आई मीन इट। नेक्स्ट डे से मैंने जाना बंद कर दिया बिल्कुल। दे केप्ट कॉलिंग मी फॉर मल्टीपल डेज, बट आई डिड नॉट रिस्पॉन्ड। तो उस कंपनी के ओनर ने मुझे एक चीज़ बोली थी कि विवेक, आप जो ये टीवी पे आते हो, जो आपको पब्लिसिटी मिली है और जिस वजह से लोग आपको जानते हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस कंपनी, राइट? अब मेरे मन में आया यार, if it's all because of them, then who I am? Have you asked this question to yourself any time? Who you are? आपकी कोई पहचान है या बनानी है कुछ? बहुत से लोग होंगे आप में से जो इमेजिन करते हैं यार विराट कोहली को ऐसे खेलना चाहिए था, करते हैं ना? या इस एक्टर को इस मूवी में ऐसे एक्टिंग करनी चाहिए थी, या मोदी जी का डिसीजन ये वाला गलत हो गया यार, इनको ऐसे ले सजेशंस देते हैं ना। बट हैव वी थॉट अबाउट आवरसेल्व्स कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैंने लाइफ के डिसीजन सही लिए हैं या नहीं लिए, राइट? सो राइट डिसीजंस कैन चेंज योर लाइफ। अगेन 2014 कंपनी छोड़ दी,
माई वाइफ आस्ट कि यार बेटी है हमारी एक छोटी सी, सो 2 साल की थी वो उस टाइम पे, और जॉब छोड़ दी है. मैंने कहा यू आर डूइंग जॉब, नो प्रॉब्लम. शी सेड कि ऐसे तो नहीं चले. मैं डोंट वरी, वट एवर आई वॉज गेटिंग फ्रॉम देयर यू विल कीप गेटिंग इट. सो one of my friend he said ki Vivek, let's start business in the partner, I will support you. He was running one of the biggest ISO company in Delhi at that time. So we started a company called Finethic Wealth Services Private Limited, जिसका नाम अभी मेरे इंट्रोडक्शन में बताया. So Finethic means financial ethics, तो ethics पे काम करने वाली कंपनी in the field of investments. So we started that company in 2014. 2016-17 तक कंपनी बहुत अच्छी चली, बट ह्यूमन नेचर आप लोगों को पता है क्या होती है. सो मेरे जो ISO वाले फ्रेंड थे उन्होंने कहा विवेक आई वांट टू एग्जिट फ्रॉम दिस बिजनेस. मैंने कहा ठीक है सर, थैंक यू, नॉट ए प्रॉब्लम. एंड ही डिमांडेड ए बिग चेक. मैंने कहा सर कंपनी का तो इतना टर्नओवर भी नहीं है. सो लेट्स डू वन ऑडिट. ऑडिट में जो वैल्यूएशन आती है उस वैल्यूएशन के हिसाब से आई विल पे यू. तो हमने एक वैल्यूएशन निकाला और वैल्यूएशन पे कुछ प्रीमियम ऐड करके आई पेड हिम एंड आई बॉट द कंपनी. और कंपनी तो बाय कर ली. बाय करने के बाद और प्रॉब्लम्स बढ़ गए. उनके जो रेफरेंस के क्लाइंट्स थे उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया. दैट इज वन. सेकेंड, रनिंग ए कंपनी इज नॉट ईजी. तो मैंने कहा ठीक है, वी आर रनिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी, सो वी विल स्टार्ट ट्रेनिंग ऑल्सो. सो हमने ट्रेनिंग भी शुरू कर दिया एंड वी स्टार्टेड ट्रेनिंग. सो ट्रेनिंग एंड ट्रेडिंग बोथ वर डूइंग वेल टिल द टाइम 2018. 18 तक बहुत अच्छा चल रहा था. आई हैड ए टीम ऑफ अराउंड 12 to 15 पीपल. आई वॉज हैविंग 3 ऑफिसेज, वन इन पुणे. Pune also I had my office, right? And everything was looking like कि यार अब तो लाइफ हो गई सेट, है ना. बट वहाँ पे क्या हुआ, 2018 my father expired. और घर में हो गया ड्रामा कुछ, गाँव में जैसे होते हैं, राइट. सो आई गॉट स्टक अप इनटू दैट. तो उसमें चल ही रहा था, 1 साल हुआ था. आफ्टर दैट कोविड हैपेंड. यू ऑल नो कोविड. सो वी वर मैनेजिंग ऑलमोस्ट 70 crores at that time, which came down to 7 crores during COVID. So from 70 crore to 7 crore. And 6 lakh per month was the costing of my office. 6 lakh per month means we were paying salaries, expenses and everything. तो 6 months तो हमने चलाया, we kept paying. उसके बाद we felt कि यार we have to cut down because COVID is going to be a long journey. So I cut down everything and I said I will again become a freelancer and I'll run that company like that. But उस टाइम पे क्या हुआ, there was one new चैनल विच वॉज लॉन्च्ड, मनी 9. मनी 9 का नाम सुना है आप लोगों ने. TV9 का ही बिजनेस चैनल है, वेब चैनल है मनी 9. सो दे वर लुकिंग फॉर सम गेस्ट्स एंड दे अप्रोच्ड मी. मैंने कहा ठीक है, आई विल कम बट आई विल चार्ज. दे सेड ओके. अब कोविड में मुझे कोई पे करने वाला मिल गया तो मैं घर पे बैठ के टीवी प्रोग्राम्स दे रहा हूँ एंड आई एम गेटिंग पेड फॉर दैट. So I was not getting paid actually. My journey was getting paid because the journey which happened उसको पे कर रहे थे वो लोग. So कोविड निकल गया, चला गया. उसके बाद मैंने सोचा यार मैंने 2 बुक्स तो लिख दी हैं. हाँ, इसमें एक चीज़ बताना भूल गया. In 2017 my book was declared as one of the top 10 books in India. Mutual fund book was declared as one of the top 10 books in India. और आज तक वो top 10 में ही है.
सो दैट गेव मी मोटिवेशन कि मैं अपनी थर्ड बुक लिखता हूँ, राइट. सो आई हैव रिटन माई थर्ड बुक which is again on trading psychology, and that was published in 2024. So that is again there. उसके बाद मुझे लगा कि सब कुछ अब ठीक चल रहा है because we were managing around 40 crore rupees. I was empaneled with some of the big corporates where I was training people. I was empaneled with Bombay Stock Exchange as a guest faculty. I was empaneled with IPF, Investor Protection Fund, as a faculty, so I've trained there also. So till date I've trained almost 1.2 lakh people on investments, right? But I've never shared this journey with anyone. So you are the first ones with whom I'm sharing this journey. So I was working well. Everything was going great. तो मैंने कहा यार लाइफ में अचीव बहुत कुछ कर लिया है, बट एक ड्रीम है जो मेरा अधूरा रह गया. What was that dream? टू बिल्ड अप ए बिग कंपनी. मैंने अभी तक बड़ी कंपनी नहीं बनाई, राइट. छोटा बिजनेस शुरू किया, उसको एक स्केल तक ले गए, एंड देन समथिंग हैपेंड एंड अगेन आई हैड टू स्टार्ट बैक. सो ड्यूरिंग दैट टाइम वन पर्सन केम इन माई लाइफ एंड ही सेड कि यार कुछ करते हैं विच इज़ रेगुलेटेड, which is for investment industry and where you can achieve your dreams. तो मैं अपने एक फ्रेंड को स्टेज पे बुला लेता हूँ, तो जिसके साथ मैंने जर्नी ज्वाइन की फिर, तो मेरे साथ ही हैं अनुज. सो अनुज सेड कि लेट्स अप्लाई फॉर AIF लाइसेंस, राइट. सो अनुज प्लीज कम. सो अनुज सेड कि लेट्स अप्लाई फॉर AIF लाइसेंस. AIF क्या होता है, आप लोगों को आइडिया है कुछ? म्यूचुअल फंड्स क्या होता है पता है? सो म्यूचुअल फंड्स के बड़े भाई को बोलते हैं PMS. PMS क्या होता है? म्यूचुअल फंड में यू कैन इन्वेस्ट एनी अमाउंट फ्रॉम 500 to 5 crore एनी अमाउंट. इन PMS 50 lakh इज द टिकट साइज. अब उसके बाद एक और प्रोडक्ट होता है वेयर यू फाइंड ओनली रिच पीपल. HNI, ultra HNI, family offices, they invest through AIFs, alternate investment fund, and that has to be registered with the SEBI. So recently we got the license of AIF from SEBI and we have started our AIF journey. So we are one of the new startup into the industry of investment management for HNIs, ultra HNIs, family offices and corporates. So Anuj is with me on that journey. Anuj, do you want to say some words regarding that? In the English both. Hello. So I can't speak much, but I just want to say that sir has passed along a very, very harsh journey. He has seen many ups and downs, many things. But one thing that remained constant with him was his persistence and his consistency and his confidence that he can do anything in the world. He has seen many downs, like he said in 2018, his father passed away. He has to shut down his business and everything. In COVID, he lost many clients, like he lost 90% of his business. But then too, he was determined enough to stay on this path. And now he is with us. He'll be managing a corpus of approximately 500 crores with InvestRight Capital Private Limited. So only one thing is there to say, be disciplined, be consistent, and have confidence on yourself. Myself, Anuj, and I might be very younger from a lot of you. My age is almost 23 or 24 years. But what we are learning from him is very immense and very great. So that's it. Thank you so much, Anuj. Thank you. So we have young entrepreneurs in India, right? And that is what. So about Anuj, I tell you one thing. इन्वेस्टमेंट सब देखते हैं, है ना, ट्रेडिंग भी करते हैं. आप लोगों में स्टॉक मार्केट के बारे में कितनों को पता है अच्छे से? डेरिवेटिव्स के बारे में किसी को नहीं पता है? डेरिवेटिव्स
Have you heard one statement from SEBI? 95% of the people who trade into derivatives lose money. ऐसा ही है? So we say, if you want to become remaining 5%, come with us. Right? So we have chosen a path which is not common. So we have launched the first hedge fund of India into AIF category, and we are happy about it. So in August, we are doing our launch event, which will be grand, which will be attended by a lot of big corporates, lot of big politicians, and on this stage, I am happy to share my journey कि मैंने आप सब लोगों के साथ अपनी journey share की, but I would say one thing, everyone sitting here is a powerhouse. How you unleash your power, that depends upon you. Setbacks आपकी life में भी आएंगे, problems आएंगे, but how do you tackle it, and do you see opportunity in those problems, or do you see problems in those problems? That depends upon you. So I always see opportunities in problems, and that's how I have come out of everything. Today I have everything what a person of my age should have. I am living a good life, I am having a beautiful family, I am having good friends like Anuj, and I have lot of people who can bet money on me. But I don't take everyone's money now. One understanding I have got, you have to be very responsible and matured about the money decisions. Right? अब COVID जब हुआ, one experiment I did. Experiment बड़ा simple था कि यार business down हो गया है, पैसे तो चाहिए ना घर चलाने के लिए. Right? तो मेरी वाइफ ने मुझे रिमाइंड कराया कि यार तूने ट्रेडिंग्स पे बुक लिखी है, व्हाई डोंट यू ट्रेड योरसेल्फ. सो आई थॉट यार ये तो सही बात है, इफ आई कैन राइट बुक्स ऑन द ट्रेडिंग आई कैन ट्रेड माई सेल्फ. तो मैंने अपना कुछ पैसा निकाला ट्रेडिंग में से, अराउंड 25 लाख रुपीज, और नेक्स्ट 16 months I have traded. Every month my return was 7 to 8%. So then I thought कि यार इसको तो बड़ा बिजनेस बना सकते हैं ना. That's how Anuj and me, we met, same minds, similar thought. He started his journey at the age of 16 years. Now it's been 8 years. I started my journey at the age of 24 years. Now it's been 20 years. So we joined hands and we have started this company. Right? So next 3 minutes, if you have any questions, I'm ready to answer. I'm always happy to interact with young minds and always happy to guide if you have any kind of question. तो आपके कोई भी क्वेश्चंस आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं, and then we'll close this. हाँ जी. Jai Hind, sir. Myself Sagar Upadhyay. Sir, my question to you is, have you earned your financial freedom yet? If yes, then what are you working for? From my perspective, you have earned your father validation, your wife validation, everyone and respect and wealth enough in the society. What is your aim and goal, and what are you yearning for? अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग द क्वेश्चन. मुझे लगा यार क्वेश्चन आप लोग अपने बारे में पूछोगे, आप मेरे बारे में पूछ रहे हो. अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, अमिताभ बच्चन became the biggest actor and earned lot of money. उसने एक्टिंग छोड़ दी क्या? मुकेश अंबानी became the biggest businessman of India. उसने बिजनेस बंद कर दिए क्या? मोदी जी 3 बार प्राइम मिनिस्टर हो गए, अब छोड़ देंगे क्या? टॉम क्रूज ने कितनी सुपरहिट मूवीज दे दी, छोड़ दिया क्या? तो वाई शुड आई? This is my passion. This is not something I am doing to earn money. This is something that is my lifestyle. This is something I enjoy doing it. Right? So my profession is not my profession. It's my lifestyle. So if I don't look at the markets, तो मुझे लगता है यार कुछ तो रह गया अधूरा. फास्टिंग हो गया मेरा आज, if I don't look at the markets. Right? So I am not working for money, I am working for passion.
आप अगर बैठ गए ना, रतन टाटा जी के बारे में सब जानते हैं. He was working till last day of his life. Abdul Kalam ji. So I have learned from all of these people. Warren Buffett. दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में है. Why is working? 93 years की एज में जाके. पैशन है, and I can understand that passion. So earning money is not the aim of your life. MBA में सबसे बड़ा मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट जो है वो यही है. You want to become something, you want to achieve something, you want to have a happy life, right? Money is just a small part of it. If you are working towards earning money, you will keep earning for your lifetime. But if you are working for your passion, if you are working for something to achieve in your life, if you are working for something to contribute towards the society, if you are working to build something, then you are on the right track. I hope you get your answer. हाँ जी. Jai Hind sir, my name is Neha Tiwari. My question to you is, you have faced many problems while your this journey. So what makes you motivated? Because अगर मैं उस जगह पे होती तो maybe it may be difficult for me to get back to that track again and again. और शायद ये मेरा प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारे लोगों का भी हो सकता है. सो ऐसा क्या रीज़न था कि आप वापस से वही ट्रैक पर वापस वही माइंडसेट से यू स्टार्टेड अगेन? See, any one of you have fell in love? Okay. So when you fell in love with someone, you do your efforts to stay together. So I fell in love with this industry. And I always say, I am married twice in my life. Once to the investment industry, that is my first wife, and second wife is my real wife. And this fact is known to my wife, that investment industry is my first wife. तो मैम ups and downs आएंगे, how can I leave? Simple. I cannot leave that. थैंक यू सर. हाँ जी. I can see there are a lot of questions people want to ask. Jai Hind sir, my name is Anshika Kandele and my question to you is, as a student, how can we start investing and where should we invest our money? Okay. तो इसके लिए तो आपके सामने एक एग्जाम्पल है अनुज. He started his journey at the age of 16 and one of the biggest investor of the world, he started his investment journey at the age of 13 years. I am late. I started my journey at the age of 23 years. So I was late. Once you come to know that this is something which can change your life, you should start. Find a mentor, take the guidance and start journey. There are two ways only. Either learn yourself and start it, or find a mentor, like I found Colonel Marwa. So he was my mentor, right? Till today, he is my mentor, and you can find yours. Thank you, sir. Sir, Last question for the day. so basically, Jai Hind, myself Abhishek Yadav. I don't have a question, but I want to advice from you. So, what's on your view? Rapidly falling, the share market is falling. On invest government share instead of investing, I am averaging them. Okay. Simple thing, find the ways to make money. Don't look at the market fluctuations. No, sir, I am just averaging them. That's your choice. So, should I withdraw that or? For portfolio advice, you need to contact me separately. And I am between expensive advisor, I cannot give it in public. and sir, apart from the large cap funds, between the short term and the mid cap, which one you recommend? I don't recommend anything. Okay. So publicly, I don't talk about all of this. Okay. Any other question? Last question, if we can have.
One last question from that, and then we'll close the session. He has raised hand multiple times, so let's see. Jai Hind, sir. My name is Rohan. So my question is, how to actually figure out that you are mature enough for FNO, because I have seen people, getting into 3K or 4 CR loss. Okay. The first thing, if you are doing 3 crore loss or 4 crore loss, your risk management is not proper. You have not learned well. That is one. You cannot lose big money without earning big, right? So one thing, you have to get back to the basics. This is indicating that probably this is not your cup of tea. So if you are losing continuously, still not learning, still not going back. So I will share a very small story here. There was a person in US. I have read this story from a book, one of the most famous book on stock markets, Market Wizards. Market Wizards is a very good book. If you want to read, learn about the stock market, you can read that. So I have found one important story in that. One person was passionate about the stock markets. So he started investing and he became zero. He went back, did job, earned some money, learned few concepts, again started, again became zero. So do you know how many times he became zero? Make a guess. No? No? 13 times. 13 times he came back to zero. He went back, did the job, and again started. Right? And when 14th time he was successful, he became one of the richest person in the US in next 10 years by trading and investing. This is the journey of one of the biggest fund manager of the world, Peter Lynch. Have you heard his name? वर्ल्ड में कंसिस्टेंटली 13 इयर्स 29% का रिटर्न्स देने वाले फंड मैनेजर्स में सिर्फ एक ही नाम है, दैट इज पीटर लिंच. हैव यू हर्ड अबाउट माइकल ब्लूमबर्ग? एट वन टाइम ही वॉज रिचेस्ट ऑन अर्थ. हैव यू हर्ड अबाउट जिम क्रेमर? So if you want to learn about stock market, read about all of these people. Right? So money is not something you should crave for. Money is something you should prepare for. You have to be responsible about it and consider it as your family member. It will remain with you. Right? So thank you very much for listening to me, and I hope you must have got something from this session. Thank you so much.